बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं निम्रा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर बयान दिया है कि बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर बात की जब बरतानिया ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन ने रूस के हामी लीडर को रखना चाहता है। Continuously with the Metropolitan Police, so I welcome the Met's decision to conduct its own investigation because I believe this will help to give the public the clarity it needs and help to draw a line under matters. But I want to reassure the House, Mr. Speaker, and the country that I and the whole government are focused 100% on dealing. Present this area in Parliament. I'm continuing a fine tradition. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जन सैकी ने मंगल को अपनी ब्रीफिंग दी, जहां उन्होंने कई मसाइल पर सहाफियों के सवालात का सामना करना पड़ा, बशमूल मशरकी यूरोप में हजारों अमरीकी फौजियों की मुमकिन तैनाती, क्योंकि रूस और यूक्रेन पर सरहद की कशीदगी बढ़ रही है। Last night, President Biden spoke by phone with New York City Mayor Eric Adams to express his deepest condolences over the tragic shootings last Friday of 2 New York Police Department officers, including one fatally. President Biden reiterated his admiration for the brave men and women of law enforcement who risk their lives on a daily basis to protect our communities. वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तेवंस के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान में तैनात जमहूरी तेवंस के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने मंगल को वज़ारत ख़ारजा में इनसे मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के तेवंस के साथ ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, भरपूर सकाफती विरसे की बुनियाद पर अस्तवार हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने पीर के रोज वाशिंगटन और नेटो पर मालूमाती एस्टोरिया और ठोस इकदामात के जरिए खित्ते पर कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद किया। पेस्कोव ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन के फौजियों की जानिब से रूस नवाज अलैदगी पसंदों पर हमला करने का इम्कान बहुत ज्यादा है। डीओडी प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी पीर को पेंटागन में रूस यूक्रेन की सरहद पर सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ब्रीफिंग दे रहे हैं। Response force, it has not been activated. It is a NATO call to make, but we have contributions to that response force, as do other nations. As I said, it's 40,000 some odd strong. Our contributions don't come near the 40,000 number. Other nations are going to have to contribute as well. But for our part, महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस एक न्यूज ब्रीफिंग दे रहे हैं, एक दिन बाद जब स्टेट डिपार्टमेंट के कैफ यूक्रेन में अमरीकी सफारतखाने के मुलाजमीन के अहले खाना को मुमकिना रूसी हमले के खदशात से पेश नजर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। These attacks on the UAE and Saudi Arabia, as well as recent airstrikes in Yemen that killed civilians, represent a troubling escalation that only exacerbates the suffering of the Yemeni people. We call on all parties to the conflict to commit to a ceasefire, abide by their obligations under international humanitarian law, including those related to protection of all civilians, and participate fully in an inclusive NYC के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क के शहर में बंदूक के तशद्दुद से निमटने के लिए अपनी इंतजामिया के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। सिर्फ चंद दिन के बाद NYPD के 2 अफसरान को गोली मार दी गई, जिनमें से एक मोहलिक हो गया। Baby was shot in the head by gunmen who didn't care where those bullets went. And on Friday night, 2 officers were ambushed when they answered a domestic violence call. The suspect had a .45 caliber in his hand and a loaded assault rifle under his mattress. नायब सदर कमाला हैरिस मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में है। मुल्क के पुराने ढांचे को अपडेट करने और 2 तरफा बुनियादी ढांचे के कानून को फरोग देने के लिए इंतजामिया की कोशिशों पर तबसरा किया। Well, let me just first start by saying that there's almost everything about today that is about Deanna, and mothers and fathers and grandmothers and grandfathers like her around the country who have been
talking, who have been shouting, who have been crying about this issue for far too long. कम से कम 10 अफगान सूबों में चीन की मदद से खुराक का सामान पहुंचाया गया। एक मुकामी रिहायशी का कहना है कि मैं चीन की मदद की बहुत तारीफ करता हूं। सर्दियों में इनकी इमदाद ने इन सर्द और मुश्किल दिनों में हमारे तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। वादी सून पाकिस्तान की कदीम और खूबसूरत वादी है जो अपने दिलफरेब कुदरती नज़ारों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है। यहाँ मौजूद कदीमी बाग कैनेटी गार्डन के नाम से जाना जाता है और अपनी हसीन और दिलावेज आबशारों की बाइस मुकामी लोगों और ख़ास तौर पर सयाहों में मकबूल है। निम्रा खान की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा निम्रा खान की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। निम्रा खान की जानिब से फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर तस्वीर और वीडियो पोस्ट की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। अल्लाह हाफिज।